be converted into the product. And the fourth principle is that two concepts explain the catalytic power of the enzyme. Actually, how enzyme decrease the energy of activation for the conversion of reactant, for the conversion of substrate into the product. They actually interact with the substrate. Enzyme interact with the substrate, and by this interaction they decrease the energy of activation and facilitate the conversion of substrate into the product. This was the fourth principle. And the fifth one, many enzymes are regulated. You already know every of the process in our body is performed by the enzymes, and most of the enzymes are protein in nature, and many times the enzymes are regulated. How the enzymes are regulated? There are 3 or 4 things I will let you know. Some of the enzymes are ubiquitinated. Some of the enzymes are ubiquitinated to convert them into their active format. Some of the enzymes are phosphorylated to convert them into the active form so that the enzyme can work. If the phosphorylation is removed sometime, enzyme cannot work. It means the enzyme can be regulated by ubiquitination, by the phosphorylation, by the acetylation, and many times by the lipidation. Lipidation is one of the post-translational modification by which the enzymes can be regulated. Okay, so enzymes can be regulated in this way. All the processes in our body are regulated. So these were the simple lines, and we will see in detail. You don't need to worry about what we have studied about the principles. Okay, so how the study of the enzymology started? So in the 1897, what the scientists did, the Buckner did extract the whole proteins of the yeast. They sliced open the yeast and they obtained all the proteins of the yeast, and they added some of the sugar, to the extract. To the extract of the yeast, they added some of the sugars, and they did perform the fermentation. They observed their fermentation of the sugar was performed when the sugar was put in the vicinity of the yeast extract. So they were thinking that something there was present in the yeast extract that actually performed the fermentation process. They thought that some of the enzymes, some of the catalytic thing is present in the yeast. So this was the beginning. This experiment was the beginning of the enzymology. Okay. Most enzymes are proteins in nature, as I already talked. Catalytic activity depends upon the integrity and the native protein conformation. Native protein conformation means the conformation of a protein that makes it enable to perform its function. Fully functional conformation of a protein is called the native protein conformation. Fully functional conformation of a protein is called the native protein conformation. Okay. So one of the other characteristic, you can see molecular weight of the enzymes ranges from the 12 kilodalton to 1 million Dalton. Dalton is same as AMU. For the proteins, for the bigger molecular weight things, we usually replace the AMU, atomic mass unit, with Dalton. And kilodalton mean 1000 Dalton. Okay. Some enzymes require additional chemical components. For example, they require sometimes the cofactors. Sometimes, for example, cofactors are the metal ions, and you can see some of the bivalent cations are there. Iron +2, magnesium +2, manganese +2, and zinc +2. Some of the cofactors are required. And sometimes the organic molecules or the metallo-organic molecules are required by the protein part to perform its function. Those organic or metallo-organic molecules are called the coenzymes. So we are not delaying this thing. You can see all the cofactors here. Not all, actually, some of the examples of cofactors here. Magnesium is a cofactor in the hexokinase. Hexokinase enzyme, very famous enzyme that actually performs the first step of the glycolysis. Magnesium is the cofactor there. If we want to see the examples of coenzymes, we can see the examples of coenzymes here. Lipoate, coenzyme A, and flavin,
adenine dinucleotide, and different coenzymes have been shown here. You don't need to memorize all. You just need to have an idea how the coenzymes and the cofactors are facilitating the protein part to perform its function. Okay, not only these things, coenzyme and cofactor, we also need to know the definition of prosthetic group. For example, coenzymes are metal ions that are very tightly or covalently bound to the enzyme protein is called the prosthetic group. Very tightly bound coenzyme or the cofactor is called the prosthetic group. If we see the definition of hollow enzyme, complete catalytically active enzyme together. अच्छा, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? अगर कोएंजाइम या कोफैक्टर जो एंजाइम के साथ वेरी टाइटली बाउंड हो या कोवलेंटली बाउंड हो, उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं. ठीक है, कोवलेंटली बाउंड हो या फिर वेरी टाइटली बाउंड हो, ठीक है, उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं. प्रोस्थेटिक ग्रुप इज द फॉर्म ऑफ, यू कैन से फॉर्म ऑफ कोएंजाइम और कोफैक्टर इज ए फॉर्म, उसकी उसी की एक किस्म है लेकिन टाइटली बाउंड होता है, इसलिए इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं. अच्छा, ये बच्चे लॉबी में वेट कर रहे हैं, गेस्ट जो है उसको एक्सेप्ट करते जाएं. ये देखिए 3 लोग थे. ओके जी सर, मैंने एक्सेप्ट कर लिया उनको. ओके, थैंक यू. सो वी आर बैक अगेन आफ्टर द प्रोस्थेटिक ग्रुप. द hollow enzyme, complete catalytically active enzyme together with its bound coenzyme or metal ion is called the hollow enzyme. Hollow enzyme, you can see in a way that hollow enzyme means whole enzyme, complete enzyme. The protein part together with its coenzyme or cofactor is called the hollow enzyme, whole enzyme, complete enzyme. And next comes the definition of apoenzyme or apoprotein. The protein part of the hollow enzyme is called the apoprotein, right? We are moving next to the classes of the enzymes. On the basis of the function, enzymes are categorized into 7 classes. Okay, on the basis of the function, and each class have been given the EC, enzyme commission number, enzyme commission number. Okay, for example, the first class, until 2 years back, we have studied in our textbook, there are 6 classes mentioned. For the 6 classes of the enzymes are mentioned in the books, but in the 8th edition you can see there are 7 classes of the enzyme. This is new class that have been introduced into the textbooks. We will see each one by one. For example, oxidoreductase, its EC number is 1. Oxidoreductase transfer the electron. You know already that the oxidation and reduction reaction occurs side by side. Never it happens only the removal of 1 electron, but there is in parallel the gain of 1 electron in the oxidation reduction reactions. So oxidation cannot happen solely, but the reduction reaction occur together with them. Okay, so these enzymes that catalyze oxidation reduction reactions are called the oxidoreductase. And the next class with EC number 2 is transferases. They transfer the group, like ALT, alanine aminotransferase, AST. These are the transferase class of enzyme. Next class of enzyme is hydrolase. The hydrolase, they add the water and they break the covalent bond. Add water. But the lyases simply cleave the carbon-carbon, carbon-oxygen, carbon-nitrogen or similar kind of bonds. This class of enzyme is called the lyases. This is EC number 4. If we go to the EC number 5, isomerases, you can see they can isomerase the substrate and make the final product. For example, dihydroxyacetone phosphate is converted into glycerol 3 G3P, glyceraldehyde 3 phosphate. In the glycolysis, there is isomerase utilized. So isomerase do not change the molecular weight, but they change the structural formula. They change the connectivity of the functional groups. They change the connectivity or the structure. They do not change the molecular weight. The isomerase class of enzyme. The 6th class of enzyme is ligases. The ligase, from the name we can see they can join the 2 molecules. The formation of carbon-carbon or carbon-sulfur or carbon-oxygen or carbon-nitrogen bond is carried out by the class of enzyme called the ligases, and its EC number is 6.
And the seventh newly introduced class of enzyme is translocases. They transfer the substrate from one side of the membrane to the other side enzymatically. So this class, seventh class, is called the translocases. Some of the objective type question may appear from this slide, the classes of enzyme, and we classified the enzyme based upon their function. So we are moving forward how enzyme work. We already talked in the principles. Enzyme have the active site. They have been shown here in the red. You can see with the red color the enzyme active site have been shown, and you can see the substrate is somewhere near going to bind to the active site, and all the enzymatic reaction occurs in this active site. This is the generalized enzyme substrate reaction, E for enzyme and S for substrate. And first of all, enzyme and substrate are joined together reversibly to make the ES complex. This ES complex is then converted into the EP complex, and then the product is released by the enzyme, and enzyme gains its initial starting shape. And enzyme is not affected, only the substrate is converted into the product by this enzymatic reaction. This is the generalized enzymatic reaction. I may ask you in the exam, where E, S and P represent the enzyme substrate and ES, EP complexes. Okay, we are moving forward. Ground state and the transition state. What the ground state is? For example, some of the substrate, any chemical, iron, nickel, anything that is present somewhere in the environment has a ground state energy, If it has to be converted into the product, it has to overcome some energy barrier. This energy barrier is called the transition state. And the energy required to overcome this transition state is called the transition energy. Definitely, if the product is obtained from the substrate, and if the product has the infinite stability, definitely it will have some ground state energy. You already know in your FSC and matter classes, every species, every substance, every matter things has some energy of its molecules, and that have somehow been depicted here, have been mentioned here as the ground state. And definitely in many cases the substrate has the high ground state energy as compared to the product. That's why the conversion of substrate into the product is favorable in many cases. If the product has higher ground state energy as compared to the substrate, so the reactions are not favorable, and we have to give energy from the outside. And you can see the transition energy have been shown here by delta G, and you can see from the product to the substrate, the difference of Gibbs free energy is shown here, and this is the difference in the ground state energy and of the substrate and the product have been shown here somewhere here, you can see. Okay, we are moving next. Biochemical standard free energy, this is calculated at 7 pH. This is a similar thing. And energy of activation, we have already seen the energy of activation we have seen in the previous slide. These are the simple definition. So what is the difference between the catalyzed and uncatalyzed reaction? Catalyzed reaction here means the enzymatic reaction. How enzymatic reaction facilitate the conversion of the substrate into the product. So you can see this black line. This black line shows the energy level when the substrate is converted into the product. And this is the black line is the uncatalyzed reaction, delta G uncatalyzed reaction. And you know, uncatalyzed reaction, we have to mount that much high level of energy before we convert the substrate into the product. But in the case of catalyzed reaction, we can see that very little energy is required. Very little energy needed to mount before we convert the substrate into the product. And you can see there is perturbation. There are, you can see the troughs. There are troughs showing the ES complex and EP complex before substrate is converted into the product. I am here on the blue line here. I am here on the blue line. On the blue line, ES and EP have been shown with lower energy. This lower energy is because the enzyme and the substrate
has interaction, have some attractive powers that actually decreases the energy of activation. That's why we can see this trough somewhere here. And then the catalyzed reaction ultimately facilitate the formation of product somewhere here. अच्छा बच्चों आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही? मैंने कहा एक दो माइक ऑन कर लें. यस सर. अच्छा अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम क्वेश्चन में बताने लगा हूँ. कुछ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. मैं आपके इंटरेस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी बातें करता हूँ. ठीक है, तो पॉसिबिलिटी होती है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है. सो व्हाट इज दिस स्लाइड अबाउट? Catalysts do not affect the reaction equilibria. We already talked that the enzyme catalyze the reaction and convert the substrate into the product. But the important thing that they do not affect the equilibria. Many times, you know, from the substrate to the product in our body, many reactions are reversible. In those reversible reactions, we know the concept of equilibrium. When the rate of forward reaction becomes the rate of reverse reaction and there is no change in the concentration of the reactant and the product, that state is called the equilibrium. It is stated here, catalysts do not change the equilibrium, but they only speed up the reaction. They only speed up the reaction, but they do not change the equilibrium. Any enzyme that catalyzes the reaction from substrate to the product also catalyzes the reaction from product to the substrate. Substrate to the product and product to the substrate, it means the reaction is reversible. It is going both ways. It is going forward ways in the forward direction and is going into the backward direction, the reverse direction. For those reversible reactions, enzymes accelerate the interconversion of substrate and the product. But enzymes are used up in the process, are not used up in the process. Enzymes are not used up in the process, and also enzymes do not change the equilibrium. The equilibrium point is unaffected. This is the important point here in this slide. Once again, the reaction intermediates. Sometimes we say the reactants are being converted into the products. Because we are in the enzymology, we will always say substrate are converted into the product. Here we do not say reactant, here we say substrate. In the enzymology, we say substrate instead of reactant. Substrates are being converted into the product, you can see on this slide. If something intermediate is formed in between the substrate and the product, that has some finite lifetime. That has some finite lifetime. Finite mean कोई ना कुछ की हद होनी चाहिए. 1 मिनट, 2 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड, आधा सेकंड, फिनिट. ठीक है, अगर कोई चीज 1 साल से पड़ी हुई है, that is called almost infinite time. If something is stable for even 1 year, we say it is the final product. If some of the intermediate is there between the substrate to the product for a finite lifetime, that species is called the reaction intermediate. That species is called the reaction intermediate. And you can see the somewhere here somewhat stability is there. Somewhat stability is there. Okay. So this is the definition of reaction intermediate. You already understand. And you know the product has how much lifetime? It has infinite lifetime. Infinite lifetime. Anything from the reactant to the product, if it has the infinite lifetime, that is the final product. That cannot be the intermediate. Intermediate has to has the finite lifetime, not infinite. Okay, we are moving forward. Rate limiting step. Usually the step that has highest energy of activation is called the rate limiting step. Highest energy of activation. Sometime in the chemistry, in the FSC classes, the last chapter was about the kinetics. In the FSC classes, you already studied. It was stated there. The slowest reaction sometimes is called the rate limiting step. Here definition comes as highest energy of activation. The step with the highest energy of activation is called the rate limiting step. It determines how fast the reaction will be. It determines how fast the reaction will be. Okay, so it is stated here the activation energies are barrier to the chemical reactions. We already have seen this thing. Okay, so the
Gibbs free energy can be calculated by using this formula, where is R is the gas constant, T is the temperature in Kelvin, Ln is the natural log, and K equilibrium comes somewhere from here. You can see here. And you know already, if the K equilibrium is very small, the Gibbs free energy will be high. If the K equilibrium is very small, Gibbs free energy will be high. And if the K equilibrium is very high, the Gibbs free energy is very small, in the minus. And you should know, if the Gibbs free energy is in the minus, the reaction occurs spontaneously many times. The reactions are, you can say, favorable. If the Gibbs free energy is negative, the reactions are favorable. If the Gibbs free energy is positive and high, we have to give the energy from outside to carry out the reactions. And the Gibbs free energy has inverse relation with K equilibrium. And you already know K equilibrium in your FSC class, in the previous classes, is the product of the concentration of the products to the product of the concentration of the reactants. You can see it has been written somewhere here. And this big parentheses mean that the concentrations are in molarity, in mole per liter. Big parentheses mean concentrations are in mole per liter. And you can see, if there is one reactant, the velocity of the reaction can be calculated by this expression, by this formula, where K is the rate constant. K is the rate constant, as you studied in your FSC classes already. And K has the unit, in this case, if the one substrate is involved, then its unit is per second. And if the two substrates are involved, the unit is per mole per second. If the two substrates are involved, the velocity of the reaction can be calculated by this expression. Okay, we are moving forward. So one of the concept about the enzymatic reactions was that the lock and key model. The substrate is fit into the active site of the enzyme, just like the lock and key. This was one of the old concept, but this concept poorly explains the enzymatic reaction. When they considered the energy of activation, this lock and key model poorly explained the enzymatic reactions. We can see here are the two models given for the enzymatic reactions. Okay, first of all, they are talking that if there is no enzyme involved, this is the, for example, substrate. If we want to break it, a lot of energy is required. If the no enzyme is involved, and we have to overcome that much high energy of activation before we convert the substrate into the product. Okay, in the case of enzymatic reactions, if we consider the lock and key model, lock and key model tells that substrate is exactly fitted into the active site of the enzyme. And you know, if you want to break some stick or something, you cannot make one posture. First of all, you will hold the stick, and then you will pull some inward outward power to break the stick. But the lock and key model is in a way that maximum energy will be required to break the substrate into the product. So energetically, the lock and key model could not explain the enzymatic reaction, the favorable condition of the enzymatic reaction. Even the lock and key model of the enzymatic reaction, if it occurs, does require a lot of high energy. And you see, there is a trough of the enzyme substrate complex. This has gone down, its energy is very low. It means that there are interactions between the enzyme and the substrate that has lowered the energy of this ES complex, Okay, and to convert then the substrate to the product, still we have to mount that much high energy barrier before we. Yes, बोलो जी. हाँ जी बोलो. सर थोड़ा सा उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दें सर. अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ जी, उर्दू में कर देता हूँ. ठीक है, ये आपने एफएससी में पढ़े हुए यार, ये सारे एफएससी में पढ़े हुए हैं आपने. ठीक है, मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ आपको, देख लो. उर्दू में कोशिश करता हूँ, पढ़ाता हूँ उर्दू में. देखो जी, अगर हम ना लॉक एंड की मॉडल देखें ना, तो इसकी
एनर्जेटिक्स जो है ना लॉक एंड की मॉडल की, ये इतनी टफ, इतनी हाई एनर्जी चाहिए कि जो एक्चुअल में नहीं होती, जो नहीं चाहिए होती एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए, तो उसको लॉक एंड की मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। लॉक एंड की मॉडल में हमें इतने हाई एनर्जी के लेवल को भी है ना ओवरकम करना पड़ेगा इससे पहले कि हम इस प्रोडक्ट को हम हासिल कर सकें। तो अगर हम इंड्यूस फिट मॉडल की बात करना, देखिए हम कोई भी काम करते हैं ना, किसी भी टेबल को, चेयर को बनाते हैं, तोड़ते हैं, हम पोस्चर चेंज करते चले जाते हैं जिस जिस तरह हमें ताकत चाहिए होती है। बात खत्म, थंब को हाथ के अलावा थंब की ताकत यूज कर रहे होते हैं किसी चीज को तोड़ने के लिए, बनाने के लिए, कभी हम क्या कर रहे होते हैं। तो इंड्यूस फिट मॉडल भी यही कहता है कि जब तक वो अपने आप को मॉडिफाई नहीं करता कि फेवरेबल कंडीशन के लिए कि प्रोडक्ट बन सके, और इंटरमीडिएट कंडीशन जो है, इंटरमीडिएट जो है वो फुली उसके अंदर फैसिलिटेट हो सके ताकि प्रोडक्ट बन सके, तब तक ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं हो सकती। तो इंड्यूस फिट मॉडल यही कहता है कि वो अपनी शेप को इस तरह चेंज करता है दैट इज फेवरेबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, इसी यही वजह है वो फेवरेबल कंडीशन। देखें अगर आप पॉस्चर को नहीं चेंज, अगर आप जैसे पहाड़ पे चढ़ते हो, पहाड़ पे चढ़ते हो, ये फॉर एग्जांपल एंजाइमेटिक रिएक्शन समझ लो, रिएक्शन है, अगर आप झुकते नहीं हो आगे की तरफ, कितना जोर लगता है, अपने आप को चेंज करते हो ना बॉडी को, तभी फेवरेबल कंडीशन बनती है। इसी तरह एंजाइम भी रिएक्शन को फेवरेबल बनाने के लिए दे इंड्यूस इटसेल्फ। समझ आ गई बात? अपने आप को इंड्यूस करता है, चेंज करता है शेप को। ठीक हो गया? क्वेश्चन का आंसर आ गया जनाब? और अगर देखो यहां पे इसने कैसे, अगर देखो तो आप यहां पे जो इंड्यूस फिट मॉडल है ना एंजाइमेटिक रिएक्शन में, इट एक्सप्लेन्स वेल द वेरी लो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। एंजाइमेटिक रिएक्शन में बाहर से उतनी एनर्जी हमें नहीं चाहिए होती, उस तरह हमें नहीं कंडीशन चाहिए होती हमें, हमारा जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है इज लोअर्ड। ठीक है, और इस मॉडल को ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कौन कर सकता है? लॉक एंड की नहीं कर सकता, इंड्यूस फिट मॉडल कर सकता है। ठीक है, हम आगे चलें थोड़ा सा और। अच्छा जी, बस ये छोड़ दो, स्पेसिफिसिटी है, कुछ स्पेसिफिसिटी पढ़ लिया, डेफिनेशन कुछ छोड़ दो, ये भी छोड़ देते हैं हम। ये चूंकि आपका मेजर नहीं है तो हम इंट्रोडक्टरी में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये भी नहीं पढ़ना आपने। अच्छा, एंजाइम काइनेटिक्स है आपके सिलेबस में? मैंने कंटेंट मुझे सारे याद नहीं आ रहे। एंजाइम काइनेटिक्स को स्टूडेंट का माइक ऑन है? नहीं है उसमें, एंजाइम काइनेटिक्स नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। देखिए एंजाइम जहां पे आते हैं ना, एंजाइम का मैकेनिज्म जहां पे आता है, मैकेनिज्म तो है ना मेरे ख्याल एंजाइमेटिक रिएक्शन का, तो थोड़ा सा हमें ना उसके देखना पड़ता है काइनेटिक्स को। मैकेनिज्म इज सिमिलर टू, यू कैन से, उसमें काइनेटिक्स भी आता है। ठीक है, ठीक है। अब जब आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था एफएससी में, काइनेटिक्स का था ना, रिएक्शन काइनेटिक्स का, तो उसमें आपने ना सिर्फ आपने ना मैकेनिज्म पढ़े थे बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन भी पढ़ा था, याद है ना आपको? मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं, अब रेट ऑफ रिएक्शन की तरफ आते हैं, बिल्कुल उसी तरह का जिस तरह आपने एफएससी में पढ़ा था। ठीक है, चलें जी। अच्छा, मैंने वैसे कभी एफएससी की ट्यूशन नहीं पढ़ाई, मुझे अपनी बातें याद है सारी। ओके, प्री स्टडी स्टेट क्या है? नहीं, मैंने नहीं कभी ट्यूशन पढ़ाई एफएससी की, कभी भी नहीं जिंदगी में। सर रोजा बहुत ज्यादा लग रहा है। नहीं, देखे ना, मैंने तो आपको कहा है पढ़ाई के लिए सारी एनर्जी बचा के लानी है। मैं लास्ट कल कहा नहीं था मैंने? अब टीचर का कहना मानना चाहिए आपको। सारी एनर्जी आपने किसके लिए बचानी है? पढ़ाई के लिए बचानी है। और ये नहीं कहना कि सर्दी लग रही है, अब गर्मी लग रही है, अब रोजा लग रहा है, अब ये होगा। ये बहाने कौन बनाता है? जिनके बाल सफेद हो जाते हैं, ओल्ड मैन के। आप ओल्ड थोड़ी हो, आपने तो डिफिकल्टीज को ओवरकम करना है, आपने एक्सक्यूज नहीं बनाने, एक्सक्यूज को ओवरकम करना है आपने। ठीक है, अच्छा जी। सर बहुत एनर्जी है, शाम तक पढ़ाते जाएं, बहुत एनर्जी है। किसमें एनर्जी? आप में भी है ना माशाल्लाह एनर्जी, अल्लाह पाक ने बेशुमार सलाहियतें दी है इंसान को। अच्छा जी। अच्छा, प्री स्टडी स्टेट क्या है? इनिशियल ट्रांजिशन पीरियड ड्यूरिंग द ईएस बिल्डअप। अच्छा, होता पता क्या है? घर भी भेजेंगे आपको। अच्छा, अब एंजाइम के ना हमने रेट ऑफ रिएक्शन की तरफ आ रहे हैं ना। मैकेनिज्म हमने देख लिया, लॉक एंड की वगैरह, हमने एक्टिव साइट को भी देख लिया, सारी चीजों को देख लिया। अब हम उसके ना रेट ऑफ रिएक्शन की तरफ आ रहे हैं। अब आपको पता है अगर एक है ना एंजाइम पड़ा हो, मॉलिक्यूल एक एंजाइम का, और 10 सबस्ट्रेट पड़े हों, तो इनिशियली जो प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। जो एंजाइम रिएक्शन होगा, 1 मिनट 2 मिनट का रिएक्शन जो भी होगा, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनने लग जाएंगे। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनने लग जाएंगे। तो इनिशियली क्या होता है? इनिशियली जो है ना, इस तरह स्ट्रेट लाइन बिल्कुल इंक्रीज होती है फॉर द प्रोडक्ट की जो है ना फॉर्मेशन है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टाइम के। एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? टाइम लिखा हुआ है। अच्छा, ये स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन बात कर रहा हूं, अभी स्टार्ट हुआ रिएक्शन।
ठीक है। अभी फिर इसी तरीके से अगर आप देखें तो सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो भी टाइम के साथ साथ जो ना डिक्रीज होती है, ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। ये जो कंडीशन ना जिसमें टाइम के साथ साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिक्रीज, इसको कहते हैं प्री स्टेडी स्टेट, प्री स्टेडी स्टेट एंजाइम की, इसको प्री स्टेडी स्टेट कहते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है आपको पता है कि अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हो, एंजाइमेटिक रिएक्शन हो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जब कंसंट्रेशन सेम हो जाती है उसको हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं। देखो लाइनें क्या हो गई हैं, हॉरिजॉन्टल हो गई हैं, लाइनें क्या हो गई हैं, हॉरिजॉन्टल हो गई हैं, लाइनें हॉरिजॉन्टल हो गई हैं। इसका मतलब है कि ये स्टेडी स्टेट है, ये प्री स्टेडी स्टेट है छोटी सी, और उसके बाद कौन सी आती है, स्टेडी स्टेट। आमतौर पे जो हम रिएक्शन काइनेटिक्स स्टडी करते हैं ना वो स्टेडी स्टेट में करते हैं। किस में करते हैं, स्टेडी स्टेट में करते हैं। जितने भी हम रिएक्शन काइनेटिक्स स्टडी करेंगे ना, रिएक्शन रेट स्टडी करेंगे एंजाइमोलॉजी के अंदर, वो हम किस में करेंगे, स्टेडी स्टेट के अंदर करेंगे। स्टेडी स्टेट क्या कहते हैं, पीरियड ड्यूरिंग विच ES एंड अदर इंटरमीडिएट्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है जी, यही पढ़ा ना हमने, रिमेन्स कांस्टेंट रहते हैं सारे जी। ठीक है, स्टेडी स्टेट काइनेटिक्स क्या है, द ट्रेडिशनल एनालिसिस ऑफ द रिएक्शन रेट्स इज कैरिड आउट इन द स्टेडी स्टेट। ठीक है, प्री स्टेडी स्टेट क्या है, when the reaction has not reached equilibrium, when the reaction has not reached equilibrium is called the pre steady state। यहां डेफिनेशन भी आप देख सकते हो। अच्छा, और इसके अलावा हम जो है ना एक ये देख लेते हैं, जो टाइम बढ़ता चला जाता है ना, जो टाइम बढ़ता, एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट भी बढ़ती चली जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है। ठीक है, प्रोडक्ट उससे ज्यादा नहीं बन सकती। उस वक्त क्या होता है, जैसे 10 बंदे हैं, उनको हर बंदे की कैपेसिटी अगर 1 है, उनको 1 काम दे दिया जाए तब भी वो कंप्लीट कर लेंगे, 2 दे दिए तब भी कंप्लीट, 10 काम दे दिए तब भी वो कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन चूंकि 15 काम दिए जाएंगे, उनकी कैपेसिटी 1 की है हर बंदे की, तो 10 काम ही कंप्लीट होंगे, चाहे जितने मर्जी ऊपर उनके ला दिए जाए, हर बंदे की कैपेसिटी है। तो जब एंजाइम फुली सैचुरेट हो जाता है ना, तो वो उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है टू मेक द प्रोडक्ट, और उस पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है ना वो कांस्टेंट हो जाती है, वो लाइन हॉरिजॉन्टल आ जाती है, वो लाइन हॉरिजॉन्टल आ जाती है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल आ जाती है। अच्छा, जो इनिशियली जो है देखो वेलोसिटी बढ़ रही है और फाइनली क्या हो रहा है, वो हॉरिजॉन्टल हो रही है। यहां पे आके हम ना ये पढ़ के ना हम रोक देंगे, इसके बाद हम एंजाइमोलॉजी और शायद ना पढ़ें। ये आप एफएससी से मैट्रिक्स से देखते आए हो, बार बार देखते आए हो। ये क्या है, जो आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन बढ़ती है। जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन बढ़ती है। ठीक है, होता क्या है, आप देख सकते हो कि जो आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाई, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीजिंग। आप ब्लैक लाइन के साथ में लाइन ड्रा कर रहा हूं, लाइन देख रहे हो आप, लाइन ड्रा कर रहा हूं। तो अल्टीमेटली क्या आता है, when the enzyme is saturated the velocity of the reaction become constant, when the enzyme is saturated the velocity of the reaction becomes constant, and there are some of the parameters we need to define in this graph between the substrate concentration and the velocity of the reaction. In this graph there are some of the terminology we need to define. There is one specific substrate concentration at which velocity is half of its maximum value. मैक्सिमम वेलोसिटी यहां तक है, इसका हाफ यहां तक है। तो at the substrate concentration at which the velocity of the reaction is half of its maximum value is called the Maclaurin's constant. ठीक है, ये हमने पढ़ना था यहां तक, तो मेरे ख्याल ये काफी है यहां तक। ठीक है, ये आपको डेरिवेशन नहीं करवाते। अब हम कार्बोहाइड्रेट एक चैप्टर और पढ़ लें हम आज। सर लेक्चर है, यहां तक समझ आ गई बच्चों को, सबको? जी सर, आगे समझ स्क्रीनशॉट कौन लेगा बच्चा? CR इधर है, कुछ GR है इधर? सर चैट में अटेंडेंस लगा देते सर। नहीं, इसका ना स्नैपशॉट लेना होता है। अभी तक कितने पार्टिसिपेंट आए हैं? ये तो सिर्फ 75 लोग हैं, आप बाकी कहाँ हैं? सर एक मोबाइल पे दो भी बैठे हैं सर। एक के साथ दो भी बैठे हैं बच्चे? तो अटेंडेंस तो इसकी ऑटोमेटिकली इक्वल नहीं है। अच्छा, इस तरह को एक बच्चा ना बोलो, चैट बॉक्स में सर अपना जो है वो एजी नंबर सेंड कर देते हैं, तो सीआर को नोट कर लेंगे सारे बच्चे। तो सीआर नोट कर लेगा, कर दो सेंड, चैट बॉक्स में सेंड कर दो सारे बच्चे। ओके सर, थैंक यू। ये तो फिर एक दूसरे का कर दोगे आप, ये क्या बात हुई? नहीं सर हम तो ईमानदारी से करेंगे अपना। अच्छा, सर तमाम ले लिया गया है।
तमाम का स्नैपशॉट ले लिया आपने, तस्वीर ले ली है? जी सर। अच्छा, मुझे भिजवानी है आपने जो स्नैपशॉट है, हमने जमा करवानी है अटेंडेंस के तौर पे भी, ठीक है? ठीक है सर, आपने भेज दो। और अगली दफा हम जो है ना कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। जी बोलो जी। ओके सर। हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सर आप ये रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे इसकी लेक्चर की? हाँ हाँ, व्हाई नॉट, मुझे नहीं पता रिकॉर्डिंग कहाँ पे, अगर होगी तो मैं सेंड कर दूंगा आपको, इसमें कोई मसला नहीं है। सर ये लेक्चर रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ मुझे लग रहा है हो रहा है, मैं सेंड कर दूंगा आपको। यस सर। यस सर। सर क्योंकि मेरी क्लास हो रही थी सर, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया है। हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी ये लेक्चर जो है ना, मैंने आपको कल भी वीडियो लेक्चर कुछ भेजे हैं, 2 लिंक भेजे, एक मैंने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक भेजा है आपको, एक मैंने अमेरिकन है प्रोफेसर, उनका लिंक भेजा है आपको, जिसके लेक्चर अच्छे लगे वो सुन सकते हैं, और ये लेक्चर भी मैं इंशाल्लाह शेयर कर देता हूँ आपके साथ, ठीक है? जी सर, हमने सुने थे, काफी इंफॉर्मेटिव थे उनकी। हाँ हाँ हाँ, वो जो मैंने दूसरे प्रोफेसर के भेजे ना, वो भी बड़ा आस्ता आस्ता बोलती है, आपको समझ आ जाएगी उसकी इंग्लिश, वो लेडी है ना कोई, ठीक है? चलो ठीक है फिर, ओके, टेक केयर, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। जो कोई क्वेश्चन हो अल्लाह हाफिज सर। मुझे चैट कर सकते हो मेरे साथ। अल्लाह हाफिज। सर प्लीज लीव करके सर। आता ना। ओए तीनिया पीड़िया हटिया।